Question number 9. In a hydrogen atom, the electron make a transition from n plus 1th level to the nth level. If n is greater than 1, the frequency of radiation emitted is proportional to the. According to Bohr thought postulates, transition of electron to higher level to ground level, higher level to lower level, it emits some energy which is equal to h nu equal to E2 minus E1 upon E2 minus E1. Here we know that the E इक्वल टू यहाँ टोटल एनर्जी E इक्वल टू होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है माइनस mz² e⁴ अपॉन 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1/n². Okay, here r equal to mz² e⁴ upon 8h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर into c. This r is called Rydberg constant. Okay, if we can write E equal to minus r h c upon n square. Okay, then E1 equal to minus r h c upon n square according to questions. En इक्वल टू हो गया यहाँ पे, और सेकंड हो गया En प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस आर एस सी अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर. ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड टू प्रोपोर्शनल. ट्रांजिशन एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1 इक्वल टू minus RHC. Here you can En plus 1 minus En equal to RHC कॉमन ले लिया और जाएगा हमारे पास 1/n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/n². डेल्टा इक्वल टू जाएगा हमारे पास एच कैन राइट डेल्टा इक्वल टू एच टाइम्स न्यू व्हेन न्यू इज द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू जाएगा माइनस आर एच सी अपॉन n² माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n² into n plus 1 का होल स्क्वायर. Okay, again we can write h nu equal to minus r h c into n² minus n² minus 1 minus 2n. Okay, divided by n² into 1 minus 1 plus n का होल स्क्वायर. Okay, these are cancel out. Here minus कॉमन और h से कैंसिल आउट. न्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर सी इंटू 1 minus 2n upon n² into 1 minus n 1 plus n का होल स्क्वायर. Okay, according to questions, if n is greater than 1, it means if n is greater than 1, then we consider
n plus 1 equal to n, and then we get nu equal to rc, sorry यहाँ पे 1 plus rc upon 2n upon n square into n square. Here n is n cancel out, then we get rc into 2 upon n का क्यूब. Okay, finally we get frequency nu is directly proportional to the 1 upon n power 3 r. Next question. Time period of revolution of electron in its ground state orbit. Ground state means n equal to 1. Hydrogen atom of is 1.6 × 10⁻⁶ second. This is T1. The frequency of revolution of the electron in first excited state. It means n2 equal to 2. According to Bohr formula, T time period T is proportional to the n power 3 upon z square. Okay, here n is the principal quantum number, yani and j is the atomic number. For the hydrogen, z equal to 1. T1 upon its mean T is directly proportional to the n का T1 upon T2 equal to n1 cube upon n2 का क्यूब. अर्थात T2 equal to T1 n2 cube upon n1 cube equal to 2 का क्यूब upon 1 का क्यूब into 1.6 into 10⁻⁶ second. इसमें T2 equal to 8 into 1.6 into 10⁻⁶ second, which is equal to 8.12 into 10⁻⁶ second. Sorry, 12.8 into 10⁻⁶ second. This is the excited state. But in this question, we ask frequency at the excited state, any nu. Here nu equal to 1 upon T2. 1 upon T2 equal to कितना है हमारे पास 12.8 into 10⁻⁶ second. Sorry, into 10⁻⁶ second. अर्थात 10⁻⁶ upon 12.8. Frequency nu equal to 7.8125 into 10⁻⁴. 8.12 into 10⁻⁴ second inverse r hertz. This is the frequency. Next question is in a hydrogen atom initially in ground state is excited state by absorbing a photon. हाइड्रोजन एटम पहले ग्राउंड स्टेट में है, जैसे ही वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है. तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 980 एंगस्ट्रॉम है.
then the radius of hydrogen atom and excited state. एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या होगी? ओके, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि एक्साइटेड स्टेट एन टू इक्वल टू हाउ मच. तो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा आर एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दैट इक्वल टू एच सी इक्वल टू 12,500 upon 980 in electron volt. Okay, energy equal to around 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा. ओके, वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला इक्वल टू -13.6 अपॉन n square. But transition energy, which means electron absorb some energy, it goes from ground state to excited state. Then in this case En minus E, this is suppose E0 ground state, E0 equal to -13.6 come out 1 upon n square minus 1 upon 1. ग्राउंड स्टेट सपोज 1 है. ओके, En माइनस E0 इक्वल टू -13.6 upon 1 upon n square minus 1. Here this is equal to h nu. h nu ने फाइंड किया कितना 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6. It is also in electron volt. Okay, 1 upon n square minus 1. This is cancel out, we get n equal to 4 after solving this. Okay, हमें पता चल गया कि एक्साइटेड स्टेट जो है 1 इक्वल टू 4 है. अब हमें पूछ रहा है कि एक्साइटेड स्टेट के केस में बोहर रेडियस है, एटम का रेडियस फाइंड करना है. तो हमारे पास जो रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है आर ई डायरेक्टिव. आर जो होता है रेडियस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के. ठीक है, इसमें आर इक्वल टू आर ई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर टाइम्स A0, 16 times A0. This is the answer. Here A is the Bohr radius, which value is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है. ओके, in hydrogen atom makes transition from one energy level with quantum number n to the another with quantum number n minus 1 if n is greater than 1, if the frequency of radiation emitted is proportional to. हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है ड्यूरिंग ट्रांजिशन. न्यू इक्वल टू En माइनस 1 upon h. We know that E is directly proportional to the 1 upon n square. Then nu equal to 1 upon h into 1 upon n square minus 1 upon n minus 1. Nu is proportional to the 1 upon n square into n minus 1 square. Here n square
n-1 का होल स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n अगेन माइनस n स्क्वायर, the n square cancel out, and where in this question n is greater than 1, it means n minus 1 equal to n. Okay, here put, and we get nu is directly proportional to the 1 upon n का cube. Okay, final answer nu is directly proportional to the 1 upon n square into n square, because n is greater than 1, which means n minus 1 equal to n into here 2n. This n cancel out. It means nu is directly proportional to the 1 upon n का cube. This is the answer. Next problem. A hydrogen atom and lithium plus plus ion are both in second excited state. It means n equal to 3. If LH is the and Li, this is the angular momentum of hydrogen atom and angular momentum of lithium, and EH and ELI, here energy of hydrogen atom, energy of lithium atom, and they respectively. Find the relation. इसमें LH and Li, इनके बीच relation, and EH and EL. Okay, we know that according to Bohr's second postulate, angular momentum L equal to mvr equal to nh upon 2 pi. It means L equal to nh upon 2 pi. Here n is the hydrogen atom and nh equal to n Li equal to 3. Okay, it means LH equal to Li first. मतलब angular momentum of hydrogen atom and angular momentum of lithium ion are same because it is depend on n value. Here n is also same. Okay, second is energy E is directly proportional to the z square upon n square, r equal to minus 13.6 z square upon n square. EH is proportional to the z, hydrogen atom के लिए z equal to 1 and n equal to 3 दे रखा है बोथ सेकंड एक्साइटेड, इट मीन n equal to 3, यहाँ पे 9 हो गया. ओके, फॉर द लिथियम आयन z equal to 3 का स्क्वायर अपन 3 square which is equal to 1. Okay, sorry, EH equal to Li upon 9. It means EH equal energy of hydrogen atom is less than upon energy of
lithium ion. Okay, your final answer LH equal to LLI, angular momentum of hydrogen atom equal to angular momentum of lithium ion, and energy EH, which is greater than energy of EH, which is less than energy of lithium ion. This is the answer. Next problem. An electron in hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number Ni. Vi and Vf are respectively initial and final potential energy of the electron if Vi upon Vf equal to 6.25. Okay, then smallest possible Nf is potential energy U equal to or V equal to minus m z square e power 4 upon 4 h square epsilon naught square into 1 upon n square. Okay, or B directly proportional to 1 upon n square. It is suppose Vi equal to Vi is proportional to 1 upon Ni square and Vf is directly proportional to the 1 upon Nf square. Then Vi upon Vf equal to Nf square upon Ni square. Here we find, हमें यहाँ पे निकालना क्या है Nf, तो Nf इक्वल टू Vi upon Vf अंडर रूट इंटू Ni. ओके, Nf इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vi upon Vf into Ni. Here Vi upon Vf equal to under root of 6.25 into Ni. Nf equal to 2.5 times Ni. Okay, this is the answer.